Okay, so this program, first program we have already done sum of two number. Now I'll show you second program, that is subtraction of two numbers. Let's read the program. Write a program in assembly language to subtract two 8-bit numbers stored in C050 and C051. Store result in next consecutive location. So first you go with the logic. सेम कॉन्सेप्ट जैसे सब्ट्रैक्शन एडिशन था, सेम सब्ट्रैक्शन, इंस्टेड ऑफ ऐड इंस्ट्रक्शन यू जस्ट नीड टू पुट subtract instruction. तो same program that you have two input locations C050 where your first number is stored, let's say 5. Okay, next program is C0, input location is C051 where you have entered 0 2. Okay, and final result will store in location C052 which should be 3. The answer should be 3. That is your input location. आप हमेशा जब भी प्रोग्राम के लिए लिखोगे तो फर्स्ट यू शुड बी क्लियर विद योर इनपुट आउटपुट लोकेशन. आप अगर उतना भी इनिशियलाइज करते हैं और थोड़ा भी कॉन्सेप्ट, इनपुट आउटपुट के भी मार्क्स हैं. If you are writing input output properly, counter if you have said properly, then also you can get 1 or 2 marks for that. If you are not clear with the logic or if your logic is wrong, then still you will get marks for initialization, for entering the data, and for showing the output. That is also there. Yeah, so that should be clear for you. Now next is same concept, consecutive location है तो we can use HL register pair. So HL will point to the first memory location with the help of LXI as C050. Now for subtraction also one number should be in accumulator. So you have transfer the content of accumulator into accumulator. Then you move to the next location so that you can go to the next number by incrementing the content of HL register pair. Now first number is in accumulator and second number is in memory pointed by HL register pair. Now both numbers you are having, now you can use sub m, so which is basically subtracting the content of memory pointed by HL register pair from accumulator, and final result will come in accumulator, right? And where you have to store your result in next consecutive location, then again you take increment. So it will increment and point to this location C052. There you can store your final result in memory. Right now it is in accumulator and you have stored in memory, and then stop your program. तो same concept है. तो आप इसको आप हेक्स कोड तो सबके लिए सेम ही है. LXI का आपने ढूंढा हुआ है ऑलरेडी 21 है, राइट? Then move a comma m. I'm doing again. Why I'm doing again? So that you will able to, and you will understand each and everything. Move a comma m. तो move में first you go to this location A, that is your source, and then go to your destination, that is your m. So this is your 7. तो ये सोर्स दिया हुआ है और ये आपका डेस्टिनेशन दिया हुआ है, एंड यू प्लेस 7 over here. INX H to INX and go to H, so this is your 23. Now this way you can search for each and every hex code. तो sub m is new here. तो sub m का क्या है कोड? तो where is sub instruction? This is your sub instruction and you have to go to m. So this is your m. This is 96. So you have to enter here 96. Okay. Then INXH you have already searched 23. Move m comma a. So move m comma a. तो यहाँ पर आप आ गए 77 and then CF. So this way you have to fill your hex table, each and every code for each and every location. Understood? So if it is 3 byte, so last 2 byte is for address. First you have to fill lower order byte in second memory location, and in third memory location you have to store higher order byte. Now how to run? Again I am showing on the kit कैसे run करना है इसको. So this is your 8085 kit. Now first what is your first step? Reset, then press set,
then enter starting address of your program. This is your starting address C00 जहाँ से आपने program start किया है. Then press increment. Reset, set starting address of your program, increment. And this data field will appear. There you have to enter 21. It is already there. Then you have press increment. Then it is already there 50. Press increment. C0 is also there. Move a comma m 7e is also there. Then again C005 423. Now at C005, instead of add-m you are doing sub-m. So you have to change here X code, that is 96. Okay, and others are same. INX is 23, move m comma a 77, RST1CF and increment. Okay, now this is your first step, that you have load your program. Now next is to enter your data. तो where you have to enter your data, जो input locations हैं, तो input locations क्या है, C0, 50 and C0, 51. तो again reset, set, enter your input address, that is C050, and then press increment. So here you can give any number, like 5 you have given, increment, 2 you have given, increment. So here answer should come 3. But right now we have not executed our program. Then what is this? What are the steps for execution? Reset, go, starting address of your program, and execute. ठीक है. After execution, what is your next step? To show or to check the output. So output के लिए again set, where is your output location? What is your output location? C052, and then you press increment. So answer has come 03. ठीक है ना. डिक्रीमेंट से अजिम क्या जाते हैं, C0531 C050. तो C050 is 05, इंक्रीमेंट करोगे तो C05102, and after execution now it is showing your result. Okay, now how to check your output? Again reset. रजिस्टर के लिए भी आपको एग्जीक्यूशन स्टेप ही करने हैं. रीसेट, गो, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ योर प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट. बस अब सेट नहीं करना, रजिस्टर करना. रजिस्टर में व्हेन यू प्रेस नॉट दिस ए, दिस ए, जो कॉलेज किट है वहाँ पे कॉमन है ABCDE. तो व्हेन यू प्रेस ई तो इट इज शोइंग 03. ठीक है ना. हमारा फाइनल रिजल्ट एक्यूमुलेटर में ही आता है. और HL में क्या था, C052. फ्लैग रजिस्टर वी कैन चेक फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट. वहाँ पर हमें F कंटेंट आता है, फ्लैग का कंटेंट. दो ये 14 इट इज कमिंग हियर. ओके, तो 14 आएगा, उसका आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके बिट पैटर्न जो भी फ्लैग का रहता है, दैट बिट पैटर्न यू हैव टू राइट. क्लियर. सो दिस इज योर सेकेंड प्रोग्राम. आई होप इट इज क्लियर. थोड़ा सा किट को भी ऑपरेट करना आ गया है आपको. आई डू 2 more programs on that kit, ताकि जब आप when you practice at home, then there will be no problem. It should not come. I shared that this hex code chart also, the steps also, and this program, so you can practice at home. Now next program is, I'm doing today very simple program. This is how you means to operate your kit and to revise all these programs, because I have already done, or we have already done this program when we were doing instructions. Okay. Now what is your third program? Third program is write a program in assembly language to find 2's complement of a given number stored in C050 and store the result in F020. अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं प्रोग्राम में? What we are doing, we have to find the 2's complement. ठीक है. तो 2's complement of a given number, 2's complement के लिए क्या चाहिए होता है? 1's complement, और उसके बाद उसमें +1 ऐड करना होता है. दैट इज योर 2's कॉम्प्लीमेंट. 1's कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें पता है विच इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन वी हैव टू यूज, दैट इज कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर. CMA मुझे यूज करना होता है, और CMA के बाद जो भी रिजल्ट होगा एक्यूमुलेटर में, दैट आई विल ऐड इन दिस. तो दैट the 2 step to add the
to complement the content of accumulator and then add 1 in that content performing 2's complement. So that I can easily do with the help of CMA instruction. But where is my data? Data is at this location C050. So first you need to bring your data in accumulator to perform 1's complement. So for bringing that data, if now you have only one number, so you can use LDA instruction. LDA का क्या है? It is direct access memory where the address of the memory is given in the instruction, and that location value, the content of that address will transfer into accumulator. So this is the meaning of this instruction. तो अभी तक आप इसको अपना नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, एम वाला मेथड जो है, जो जनरल मेथड हम यूज करते हैं. नाउ LXIH यू कैन पॉइंट C050, ठीक है. और उसके बाद आप इसको ट्रांसफर कर लो मूव A, M. These two instruction also you can use instead of LDA. इसकी जगह आप ये भी यूज कर सकते हो. बट इसके बाद हमारा कोई भी नंबर हम उसको कॉन्सिक्यूटिव लोकेशन वी आर नॉट एक्सेसिंग, रिजल्ट इज ऑल्सो एट वेरी डिफरेंट एंड वेरी फार प्लेस, तो वी कैन नॉट यूज INX to move to next location. So we can use, because it is using 4 byte and it is using 3 byte, so we are saving one memory location. बट वो यहाँ पे कॉम्पनसेट हो जाती है. अब ये STA यूज करेंगे तो अगेन 3 बाइट, और अगर कॉन्जिक्यूटिव होता तो INX से ही हो जाता. तो दैट इज concepts of your location, input, output addresses, totally purely depending on that. But the same you can use with the help of LXI also. अभी एक्यूमुलेटर में आपका डेटा आ गया, तो लेट्स से एक्यूमुलेटर में जो डेटा है वो आ गया. कुछ भी आपने ले लिया, जैसे आपने ले लिया 10 ले लिया, ओके. तो 10 का बाइनरी कोड क्या होता है? 0 0 0 0 1 एंड 0 0 0. अभी हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, फिर किट पे हमें फाइनल रिजल्ट एक्स कोड में ही मिलता है. तो एक्यूमुलेटर में जब कंटेंट आ गया तो दीज टू इंस्ट्रक्शन विल परफॉर्म वंस कॉम्प्लीमेंट. तो CMA इज बेसिकली परफॉर्मिंग वंस कॉम्प्लीमेंट. तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 1 1 0, राइट. 1 1 1 1, दैट इज वंस कॉम्प्लीमेंट. एंड +1 करना है अब इसमें, that we can use INRA. So we have many instruction. You can use ADI01 और ADI01 आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ INRA you can add 1 also with the help of ADI01. तो INR करेंगे then also it will increment the content of accumulator by 1. तो जब 1 accumulator increment करेंगे, I am not using all 00 over here. So 1 plus 1 it is showing 10. Then again carry 1 plus 1 10. Again carry 1 plus 1 10. Again carry 1 plus 1 10. Again carry 1. ठीक है. एंड दिस इज 1 1 1. तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? F0. ठीक है. तो वी विल चेक this in our case that 2's complement of 10 F0 is coming or not. तो ये ध्यान रखना है, ठीक है. तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू सर्च दी हेक्स कोड. तो हेक्स कोड हम सर्च कर रहे हैं इसमें. आई विल शो दैट ऑल्सो. आई एम रिपीटिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन so that it should be clear to you, everyone. It is very important part of your syllabus. Now next LDA. Now go search for the code LDA. तो LDA अगर आप यहाँ पर देखोगे तो LDA कहाँ पे इंस्ट्रक्शन? दिस इज योर LDA इंस्ट्रक्शन and the code for LDA is 3A. So you have to write 3A over here. Okay. Next 2 byte is your address. So first you have to enter lower order byte, then you have to enter higher order byte. Then you have to check the code, check opcode for CMA. Hex code CMA के लिए you can see here. This is your CMA code and this is 2F. So here you have to enter 2F. INRA.
INR increment, this is your increment instruction INR, and go to A. Last 3C. So you have to enter here 3C. STA F020. Now what is the code for STA? Again you have to see here in STA. कहीं आपको दिख रहा है STA ये रहा. So this is STA 32. So you have to write here in first byte is always opcode, second byte is lower order byte. So 20 you will add here, and then F0 you'll have to add here, and then CF. RST1 is CF. So this way you have to enter hex code. After entering the hex code, now we will move to kit. ये steps आपको follow करने हैं. अभी आप kit देखो इधर. Kippe, what is your first step? First step was reset, set, enter starting address of your program and increment. So increment mein first you have to enter 3A. Then increment, then you have to enter 50, it is already there. C0 it is already there. Then at C003 you have to enter 2F, 2F. Okay, again increment. At C004 you have to enter 3C. C. Where is C? This is 3C. C004 पे. And again at C005 you have to enter 32. 32. Again increment. Then you have to enter 20. Right? So you have to enter 20. Then again increment you have to enter C007 पे F0. So F0. And then again increment CF is already there. You can cross check by moving back using decrement, and you can see C000. 3A, increment 50, C0, 2F, 3C, 2C. गलत है C005, 3C. It should be 3C. No, 3C. Right? At C005 for 3C. Then 32, 20, F0, CF. Now you have entered the code. Next step is to enter input. Where is your input? Can anybody tell where is your input? Reset, set. Where is your input? C050. Yes, C050. Very good. Input is at C050. Now I will enter what? Here 10 I am entering. ठीक है, इंक्रीमेंट करके ही बाहर आना है. C050 पे I have entered my input. Now how to execute? Third step. Reset, go, starting address of your program and execute. After execution you have to see your result. Result के लिए again press set and go to output location. What is your output location in this program? F020. F020. Very good. F020. So I will enter here F020. Okay. Then you press increment. Now you can see your result. F0 is coming. Is it okay? You can check register content also. Reset, go, starting address of your program and execute, press register content. So you can start from here A. तो A में F0 आ गया. फाइनल रिजल्ट F0 था. PC के कंटेंट आप देख सकते हो. RST1 ही शो कर रहा है, बट इन योर कॉलेज किट इट विल शो C009. Okay, and then you can see the content of H or L. We are not using HL in this program, so it will not for us. Only the accumulator content we have used, and all locations C050 and F020 you have to fill. ठीक है, अदर रजिस्टर्स वी आर नॉट यूजिंग. तो आप अगर इसका सेकेंड पार्ट भी देखोगे तो इसके अकॉर्डिंगली इट हैज़ चेंज इट्स कंटेंट. एक्यूमलेटर में F0 आ गया. Flag register is now 94 and program counter is at 008. Okay, so accordingly it will change its data. So it is clear everyone? Okay, we'll मैम do. आप ये फाइल सेंड कर दोगे? Hello. Yes, somebody is asking.
मैम आप ये फाइल सेंड कर दोगे? हाँ हाँ, today only I'll send. Evening, by evening I'll send in all groups. ओके मैम. Okay, next program. This is your next program, very simple program that we will also finish. Then next class we will do branching wale programs. These are all sequential programs. So this is board question also. So in this you can read your program, that write assembly language program to interchange digits of a number stored in C040. तो C040 में आपका एक नंबर है, you have to take one number in C040. Okay, then let's say 23 you have taken. Okay, then what you have to do, you have to interchange the digit. Interchange करना means you have to interchange lower and upper nibbles. ठीक है, that we have already learned. कैसे हमने करना है वो हमने इंस्ट्रक्शंस के टाइम पे भी किया था. Today also I will tell again. So this will be C040. New number you have to store at which location? At C041. And add new number with the original number. दोनों को add करना है. You will get result 55. And that you have to store in next consecutive location. इस तरह से आप हर एक प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट ऐसे now you write. So you will be clear with the aim of your program. Okay, what are the input and what you have to do and what will be the output and what is your output location. What are the input location and what are the output location. हमेशा while writing program एक साइड में कॉर्नर पे you just write just for your explanation, self explanation. कि what are input and what are the output location, क्या डेटा देना है और क्या आउटपुट आएगा. After that, now you can see that number, only single number is there, so you can take LDA, and since they are consecutive, so you can use LXI. LXI will be more better, but I did with STA just to show कि consecutive location भी आप LDA STA से access कर सकते हो. So this program will be more easy if you go with LXI. It will be more easier if you go with LXI. तो LDA से मैंने किया है, you practice with LXI. Okay, तो LDA से मैंने first number C040 कैसे ले लिया, accumulator में I have transferred and simultaneously I have transferred in B register also. ये क्यों किया, so that my original number will be with me इन रजिस्टर बी. तो 23 जो है मैंने, नहीं तो मुझे फिर से वापस C040 पे जाना पड़ेगा when I will add my original number with new number. So for original number again I need to go to C040. So instead of doing that, what we did, we have just we will store that original number in register B. Now you can see these four instructions. These four instructions are basically you used to rotate the content of accumulator. अभी accumulator में 23 है ना, you rotate this 23 4 times. Then what will happen? एक instruction क्या करती है, 1 bit rotate करती है. Either you can use RLC or RRC in your program. If you rotate this 4 times left or right, 4 times, so it will change 4-bit position and it will be like this. Lower nibble will become upper nibble and upper nibble will become lower nibble. So it will interchange. And after interchange, accumulator में number आ जाएगा, new number, that is 32. Okay. So new number is in accumulator, original number is in register B. और आपको क्या करना है, add. But before addition, you have to store this new number in C041. So that you can do with the help of STA. STA क्या करता है, reverse of LDA. LDA memory से accumulator में आ रहा है और here accumulator से it is going to memory. ठीक है, this part is over. Intermediate result you have taken. Now what you have to do, you have to store, add these two numbers and final result again will come. Now accumulator content will also change. Now it is 55.
So this 55 again you have to store in next location C042. So it is taking many memory location. If you are going with LXI, तो STA ये बार बार यूज नहीं करना पड़ेगा, which is of 3 byte instead. मैम STA के बजाय LDA लेना है ना, नहीं, LDA LDA फर्स्ट के लिए लेना है when you are moving from memory to accumulator. Now you are moving from accumulator to memory. Your final result is in accumulator na, and you have to store in memory. तो reverse process LDA का reverse process STA होता है. LDA क्या होता है, मेमोरी से एक्यूमुलेटर में लाए आप इनपुट को, आपने फिर इनपुट को रोटेट किया और फिर से उसको रोटेट करके इंटरचेंज डिजिट करके स्टोर किया. तो फॉर स्टोरिंग यू नीड STA. ठीक है, एंड फिर से आपने ओरिजिनल नंबर को न्यू नंबर से ऐड किया, एंड देन अगेन फाइनल रिजल्ट विच वाज इन एक्यूमुलेटर यू आर स्टोरिंग इन C042 with the help of this STA. So STA from accumulator to memory and LDA from memory to accumulator. Clear? उसके बाद आप इसके हेक्स कोड ढूंढ सकते हो. हेक्स कोड अभी आप यू आर फेमिलियर विद हेक्स कोड फॉर न्यू इंस्ट्रक्शंस आई एम सर्चिंग. LDA का आपने सर्च कर ही लिया था. LDA का क्या कोड था? What was the code for LDA? 3A. यहाँ से आपने सर्च किया था. This is your 3A. Move B, comma M. This instruction is new. Move B. This B and comma A. So this 47 you have entered here. Okay. RLC. RLC is here 07. So you have entered here 07. STA. STA 32 you have entered. And you can see the lower order byte और higher order byte में आपको क्या स्टोर करना है. 3 byte instruction है ना STA, तो 41 is your lower order byte and C0 should be your higher order byte. Then add B. Add B के लिए आपका कौन सा इंस्ट्रक्शन था? Where is your add instruction? Add and go to B. So this is your first code only, 80. Okay. STA के लिए again 32, this one, or then this second byte is your lower order address, lower order byte, and the C0 is your higher order address, and then RST1 CF. आपने अब ये कर लिया. Now you can run your program. तो प्रोग्राम रन करने के लिए what you have to do, you have to go to that kit. Yeah. Now kit पे reset, then set, then enter starting address of your program and increment. Now do it fast. 38 is already there. Increment 40 you have to enter. Then increment C0 it is already there. Then 47 4. Everyone please cross check. 47 increment. Then 4 times 7. 4 times 7 1 we did. Then 2 times we have done, then 3 times we have done, and this is 4th time we have done. Okay, C007 तक 07 कोड डालना है. उसके बाद इंक्रीमेंट C008 पे you have to enter 32. Then again increment you have to enter 41. Okay, then again increment you have to enter C0. At C008 it is already C0. Then 80 it is already there. I have already executed in previous class, that's why it is coming. Again STA 32 it is already there. Again 42 it is already there. C00E पे C0 and again CF and then increment. Okay, so this you have loaded. First step is over. What is your second step? To enter input. Where is your input? You please tell. Where is your input? C040. C040. Very good. So C040. 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 C040 then you press increment. ठीक है, तो हम इसमें 23 आई एम टेकिंग डिफरेंट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन दिस. तो 1 और 2 आई एम टेकिंग. ओके, दिस इज योर इनपुट. नाउ रीसेट
execute your program. Go starting address of your program and then press execute. Okay, after that you have to see your output. तो output कहाँ पे है? Intermediate output we can see first C041 में and then increment. Now it is showing 21. What we have entered 1 2. 12 का interchange किया digit तो 21 and what were और उसके बाद addition क्या हो जाएगा 33. 12 और 21 ऐड करके आंसर आया 33. ये प्रोग्राम बोर्ड में वैसे भी आता है, इंटरचेंज दी डिजिट एंड मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई वाला लॉजिक वो भी एडिशन से ही है, पर रिपीटेटिव एडिशन है उसमें, सक्सेसिव एडिशन. तो वो भी हम कर सकते हैं प्रोग्राम, वैसा भी बोर्ड में आता है कि इंटरचेंज द डिजिट एंड मल्टीप्लाई, और इंटरचेंज सेपरेट द निबल्स एंड मल्टीप्लाई भी आता है. दैट ऑल्सो वी विल डू. अंडरस्टूड. उसके बाद यू कैन सी रजिस्टर कंटेंट, रीसेट करो, देन गो starting address of your program and then execute and then press register content. So when you press A, now 33 it is showing final result. और B में क्या, B भी तो यूज़ किया था, तो what was in B? B में ओरिजिनल नंबर था, our original number was 12. तो बी में ओरिजिनल नंबर है, और कोई प्रोग्राम और कोई यूज़ किया, रजिस्टर नहीं. एक्यूमुलेटर वी डिड, तो एक्यूमुलेटर में ऑटोमेटिकली इट इज शोइंग फाइनल रिजल्ट. बी वी यूज्ड एंड एचएल वी हैवंट यूज, और कोई नहीं. Program counter you can see at it is at RST1, but when you see in your college kit तो क्या दिखाएगा, जो भी आपका लास्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है ना, ये इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, इसके बाद का एड्रेस वो दिखाएगा C010, क्योंकि हम इसके बाद इंक्रीमेंट करके प्रोग्राम काउंटर को लीव कर देते हैं. ठीक है ना. प्रोग्राम काउंटर इज होल्डिंग दिस एड्रेस. तो एवरी टाइम इट इज़ इंक्रीमेंटिंग गोइंग. एग्जीक्यूशन में सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता होता हमने लास्ट तक इसको लेके आए थे C010 तक. तो आपके कॉलेज किट में यही डिफरेंस है, पीसी जो है C010 पे दिखाएगा, और रजिस्टर कंटेंट फ्लैग के जैसे इसमें नहीं दिख रहे हैं मुझे, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो न्यू फॉर मी. तो आई विल ऑल्सो सी कि फ्लैग के कंटेंट कैसे आते हैं, बट आपको फ्लैग के कंटेंट इसके इस पार्ट में दिख जाते हैं elaborate होके. The content of flag register is 04. Here you can check. But in your that college kit, यहीं पर F का भी एक वो है, symbol है flag का. मतलब F से ही when you press F button, it will show the sorry, when you press the register button and when you press accumulator, increment करते जाओगे ना, तो you will see that flag register content also. Is a reset, go, starting address of your program and execute. When you have press button register and A, so increment, if you do it now, so it will show all B, C, D, E, H, L. Here it is not showing, but here you can see from this part. Okay, clear to everyone? एवरीवन आई थिंक क्लियर. बहुत 3-4 प्रोग्राम्स हमने देख लिए कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, दैट ऑल्सो यू हैव सीन. और हाउ टू राइट द प्रोग्राम इन टेबल फॉर्म ओनली यू हैव टू राइट एवरी टाइम योर प्रोग्राम फॉर बोर्ड एग्जाम थियोरी. व्हेन यू आर राइटिंग थियोरी पेपर, this column is not required. Don't ask sheet in your board center कि हमें export sheet चाहिए, कहीं पे ज़रूरत नहीं होती. For theory exam, you need address, label, mnemonics, and comments. And for practical exam, यही दोनों चीजें, hex code और address, this will go in the kit. So there it is very important for practical. अगर एक भी कोड आपने सर्च के टाइम पे रॉन्ग एंटर किया, and if you miss the place, LDA is 3 byte and you have allocated 2 byte, and if you forget to enter the third byte, then your program will not run. It is not like C++ कि आपको नीचे error messages आ रहे हैं कि what you did wrong. मे बी सॉफ्टवेयर में आपको आ जाए इस वर्चुअल किट में, बट जो हार्डवेयर किट कॉलेज की है, देयर यू विल नॉट सी दैट पार्ट. अंडरस्टूड एवरीवन? आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am.